अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदा के फजल व करम से tonight we are going to start our chapter number 12. चैप्टर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट हमारे पास जो बुक प्रिंट हुई थी, so we had only 12 chapters in that book. Actually there are 16 chapters, so 4 chapters were missing. So I have spoken with the Quran Drive administration, so they will print 4 chapters and they will announce from where you can get the hard copies of it. Within this week you will get the hard copies. Meanwhile what I'll do, I'll send the soft copies to you in the group, और इसके hard copies के लिए ये आपको inform करेंगे from where you can collect those hard copies. So chapter number 12 start करते हैं खुदा के नाम से और देखते हैं कि इसमें क्या words हैं. Okay, vocabulary के अंदर the first word is Injil. Injil is Bible. सेकेंड वर्ड इज अहल. अहल देखिए अरबी के अंदर अहल और एक लफ्ज होता है आल. अहल और आल देखिए हम उलमा के दरमियान में अमंग द स्कॉलर्स देयर इज a difference of opinion that is there any difference between ahl and al or there is no difference. So मैं आपको ये कहूँगा कि on this level you consider that there is no difference between ahl and al. There is no difference. Take this like this. Now what is ahl? ahl कहते हैं किसी इंसान के साथ वो लोग, those people who stay in that house with that person, they are called ahl of that person. For example, you say ahlul bayt. So ahlul bayt, देखिए according to the grammar, grammatically आप कहें तो ahlul bayt के अंदर मसलन आप कहें कि क्या रसूल खुदा की वाइफ्स आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी. अगर वो रसूल की वाइफ्स उस घर में अगर रहती हों जिस घर में रसूल थे तो यस अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल और ग्रामर के हिसाब से उनको अहलुल बैत कहा जाएगा. बट इफ वी सी कि कुरान के अंदर उनको इंट्रोड्यूस कैसे कराया गया है, बिकॉज अहलुल बैत को उनको मासूम करार दिया गया है. Because of that, you will come to know that this particular word Ahlul Bayt is being used only for those मासूमीन अलैहिमुस सलाम. लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखें तो अहल के अंदर ये कैपेसिटी है कि it can be the wives can be the Ahlul Bayt if they are living with Prophet sallallahu alaihi wasallam. लेकिन हम देखेंगे कि वर्सेस की वजह से they cannot be included. It's a different thing. So अहल कहते हैं those people who stay with someone in one house. फिर मेटाफोरिकली मजाजन इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी की भी रिलेट करने के लिए, बिकॉज ऑफ इल्म, बिकॉज समवन इज फॉलोइंग समवन, सो उनको अहल के नाम से बुलाया या आल के नाम से. जैसे मिसाल के तौर पे कुरान कहता है आले फिरऔन. सो आले फिरऔन बिकॉज दे वर द वन हु फॉलोड फिरऔन. तो दिस इज अ मेटाफोरिकल यूज. तो ये मेटाफोरिकली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसका ट्रांसलेशन पीपल ऑफ किया जाता है या फैमिली किया जाता है. फैमिली इस वजह से ट्रांसलेशन किया जाता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग यही है बिकॉज दे आर लिविंग विद दैट पर्सन इन दैट हाउस, दे आर द फैमिली मेंबर्स. पीपल ऑफ ये मेटाफोरिकली इसका ट्रांसलेशन है कि बिकॉज दे आर द वन हु आर फॉलोइंग दैट पर्सन. सो you'll do the translation people of. So you have to see, for example, if they say ahle injil, so you won't say family of Bible, you'll say people of Bible because they are the one who followed Bible. So ahl के माने आपको बता दिए. The next word is Taurat. Taurat कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, the book which was revealed on Hazrat Musa अलैहिस्सलाम.
एक आपके लिए शायद आपको मालूम हो या नहीं हो, इंजील जो है, इंजील के अंदर तौरात भी शामिल है, अगर आपको मालूम हो या नहीं है, तो तौरात इसी के अंदर शामिल है। बट हमारे पास जो इस वक्त इंजील मौजूद है, ये तो तमाम इसके अंदर चेंजेस हो चुकी हैं और हकीकी इंजील अब एग्जिस्ट नहीं करती है। द नेक्स्ट वर्ड इज वालिदा। वालिदा इज मदर, इट्स इजी। द नेक्स्ट वर्ड इज उलाइका। उलाइका, अगर आपको याद हो कि हमने इसके बहुत सारे वर्ड्स किए थे, मैं आपको अगर बता दूं आपके सामने, हमने देखें उलाइका इशारा है, इसमें इशारा है टू पॉइंट आउट समथिंग। उलाइका किसके लिए इस्तेमाल होता है? देखिए मैं आपके सामने अगर चार्ट बनाऊं तो आपको याद है या नहीं याद है, मैं आपके सामने बनाऊं चार्ट। चार्ट इसका ऐसे बनेगा, लाइक दिस। if I'll say male and if I'll say female, then in that it is near, if it is near and if it is far, ये ऐसे बनेगा। अब इसके अंदर भी तीन कैटेगरीज बनती हैं कि सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। मेरे को चार्ट डिफरेंट किस्म से बनाना चाहिए था, मैं इसका आपको बताऊंगा, चार्ट बना के भेज दूंगा मैं, बिकॉज इसके अंदर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इसी के अंदर एक कॉलम बन सकता है, यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाना होगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर मैस्कुलिन के लिए है, अगर आपको याद हो, तो मैस्कुलिन के लिए हमने कहा था कि नियर है, करीब में है, तो हम क्या कहते हैं उसको? हाजा कहते हैं। हाजा करीब के लिए। अगर यही दो हो जाएं तो हाजाने कहते हैं, सही है। और अगर यही प्लूरल हो जाए तो हम कहते हैं हा उलाए, हा उलाए कहते हैं। तो ये मेल के लिए हैं, मेल यानी मैस्कुलिन, और करीब के लिए हैं। अगर यही अगर आप दूर के लिए कर लीजिए, मैस्कुलिन के लिए अगर ये फार के लिए हैं, तो अब हाजा के जगह पे क्या आ जाएगा? जाले का आ जाएगा, और हाजाने की जगह आ जाएगा जाने का आ जाएगा, और हा उलाए की जगह आ जाएगा उलाए, उलाए। और अगर यही मैस्कुलिन की जगह पे आप फेमिनिन कर दीजिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा? हाजा की जगह पे क्या हो जाएगा? हाजिही, और हाजाने की जगह पे हाताने आ जाता है, और ये हाउलाए सेम रहता है इसके लिए। मैं इसका चार्ट भेज दूंगा आपको। सिर्फ सिंपली आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि ये उलाए दरअसल फार के लिए है, द थिंग विच इज बिट फार, और आप उसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा, उलाइका के अंदर फर्क नहीं पड़ता है, मैस्कुलिन के लिए भी आप उलाइका इस्तेमाल करते हैं, फेमिनिन के लिए भी आप उलाइका इस्तेमाल करते हैं, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल के अंदर दोनों के लिए, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए उलाइका। ओके, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रांसग्रेसर, फासिकून। फासिकून क्या है? इसका रूट वर्ड, फासिकून का जो रूट वर्ड है वो फिस्क है। फिस्क किसको कहते हैं? फसका। फसका कहते हैं कि एक शख्स जो बाउंड्री जो होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसको जो क्रॉस करता है, उसकी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, उसको हम फासिक कहते हैं, फसका। और ट्रांसग्रेसर इंग्लिश में बिल्कुल इसकी अच्छी ट्रांसलेशन है। ट्रांसग्रेसर को अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखें तो द मीनिंग विल बी द सेम, द वन हु क्रॉसेस द लिमिट्स, द वन हु वायोलेट्स द लॉ। फासिक को फासिक इस वजह से कहा जाता है कि खुदा ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस शरीयत के अंदर भेजे हैं, ही इज द वन हु क्रॉसेस ऑल द लिमिट्स। और कुछ डिक्शनरीज में ये भी कहते हैं कि फासिक ऐसे शख्स को कहा जाता है, अव्वल ये कि ये गुनाह करता है लेकिन गुनाह करने पर शर्मिंदा नहीं होता है, और ये गुनाह करने के बाद ये गुनाह जो है अलल ऐलान करता है, ओपनली गुनाह कर रहा होता है, तो ऐसे शख्स को फासिक कहा जाता है। अब ये फासिक का लफ्ज़ काफिर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और एक इंसान मुसलमान है लेकिन खुदा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, उसके लिए भी फासिक इस्तेमाल
किया जाता है. तो फासिक इज ट्रांसग्रेसर. फासिकून इज अ प्लूरल ऑफ फासिक, transgressors. The next word is furqan. The root word of furqan is farq. फर्क हमें मालूम है कि इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है डिफरेंस, या फर्क के माने डिफरेंस के भी कहा जाता है. हाँ, या मैं आपको बताता हूं. फर्क और एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, अगर आपको याद हो, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक. फलक और फर्क के अंदर, दोनों की चीजों के अंदर एक कॉमन चीज मौजूद है. फर्क के अंदर भी एक चीज है कि इसका मतलब होता है कि सेपरेट होना, जुदा होना. वन ऑफ द, यानी उसका माना क्या, फर्क का सेपरेशन है. फलक का माना भी सेपरेशन है, लेकिन द सेपरेशन ऑफ द फलक इज डिफरेंट फ्रॉम फर्क. फलक के अंदर सेपरेशन किसी चीज के टियर अपार्ट होने की वजह से होती है, किसी चीज के क्रैक होने की वजह से होती है, लेकिन फर्क के अंदर ऐसा नहीं है. तो दो चीज सेपरेट हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि टियर अपार्ट होकर सेपरेट हो. याद होगा आपको कुरान की आयत के अंदर, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आई स्वेयर बाय द लॉर्ड ऑफ द डॉन. डॉन को फलक क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज द टाइम कि उस वक्त सूरज की जो रोशनी होती है वो टियर अपार्ट कर रही होती है रात को, उसको टियर अपार्ट करके वो रोशनी बाहर निकल रही होती है, तो उसको डॉन कहा जाता है. तो वहां पर जुदा कर रही होती है, यानी दिन रात से जुदा हो रहा होता है, लेकिन उसकी जुदाई जो है, सेपरेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द टियर अपार्ट, बिकॉज ऑफ द क्रैक. फर्क के अंदर ऐसा नहीं है. अच्छा, अब इसी फर्क से निकला है फुरकान. फुरकान किसको कहते हैं? डिस्टिंग्विशर. लेकिन कैसा डिस्टिंग्विशर? हम यहां पर इंग्लिश में तो सिर्फ डिस्टिंग्विशर लिखा है हमने, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, distinguisher between, you can write this in bracket, between false and truth. तो फुरकान किसको कहा जाएगा? ये भी दरअसल डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है, जुदा कर रहा होता है, लेकिन खास किस्म की सेपरेशन है. एंड दिस टाइप ऑफ सेपरेशन इज बिटवीन फॉल्स एंड ट्रुथ. कुरान को फुरकान कहा गया है बिकॉज कुरान सेपरेट कर देता है फॉल्स को, ट्रुथ को फॉल्स के जरिए से, तो ट्रुथ को फॉल्स से जुदा कर रहा होता है. सो फुरकान इज द मीनिंग ऑफ फुरकान इज डिस्टिंग्विशर बिटवीन फॉल्स एंड ट्रुथ. ओके, और फलक के बारे में आपको कह दिया हमने, ये भी दरअसल ये सेपरेशन के माना में, लेकिन ये सेपरेशन क्रैक के जरिए से होती है, टियर अपार्ट के जरिए से होती है. नेक्स्ट वर्ड वाद. वाद इज प्रॉमिस. प्रॉमिस अगर किसी अच्छी चीज के लिए उसको वाद कहा जाता है, लेकिन अगर प्रॉमिस किसी बुरी चीज के लिए, उसको अरबी में वईद कहा जाता है. वईद. अगर खुदावंद मुतआल प्रॉमिस दे रहा है जहन्नम की काफिरों के लिए, उसको हम कहेंगे वईद है. और अगर प्रॉमिस दे रहा है खुदावंद मुतआल लोगों को जन्नत की, तो इसको वाद कहेंगे, जिसको वादा भी कहा जाता है, वाद भी कहा जाता है. The next word is anna. We did that before. The meaning of anna is that. Ha. Ha is a pronoun. Sorry. Ha is a pronoun. If I'll get, मुझे टाइम मिला, ये इंशाल्लाह इस बुक के बाद मैं आपकी कुछ ग्रामर की क्लासेस रखूँ मैं, ताकि आपके लिए सारे हल हो जाएं, प्रोनाउंस कितनी टाइप्स के होते हैं, और आपको याद हो जाएं थोड़ा सा. इंशाल्लाह खुदा ने अगर हिम्मत दी तो I'll keep a class for that. हा जो है, ये प्रोनाउन यूज होता है फेमिनिन के लिए, शी, हर और इट. यू कैन सी द ट्रांसलेशन. लव. लव जो है, इसकी कंडीशनल सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसकी मीनिंग है इफ. लव कान आलिहतुन इल्लल्लाह, लव कान आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदत. So अगर ऐसा होता, if there were lords other than Allah subhanahu wa ta'ala, so it is a conditional sentence. So conditional sentence के लिए आता है law. Aqamu, it's a plural, they established. Allamtu. See, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
अल्लम तो ये एक पूरा एक बाब है अरबी के अंदर, फ़अला का तफ़ईल का बाब है, फ़अला के वजन पर आता है। देखें ये था आलिमा था, इसका रूट वर्ड क्या है? आलिमा। आलिमा का मतलब है आई न्यू, आई न्यू। लेकिन जैसे अल्लम तो मैंने कहा, अल्लमा कर दिया, आलिमा को लाम के ऊपर तशदीद लगा दी मैंने, अल्लमा किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मालूम है, आई न्यू नहीं होगा, बल्कि आई टॉट। तो वो दरअसल क्या हो जाएगा, माना चेंज हो जाएगा। इसी तरीके जैसे खराजा, खराजा आलिमा आई न्यू नहीं था, सॉरी ही न्यू, सॉरी आलिमा ही न्यू, अल्लमा ही टॉट। इसी तरीके से आप कहें खराजा ही केम आउट, खर्रजा ही टुक आउट, ही टुक आउट। अब देखें इसका फर्क पड़ जाता है। अल्लम तो ये थोड़ा सा अल्लमा, अल्लमा से बना अल्लम तो, आई टॉट, सही है। तो यहां पर माना चेंज हो जाता है। Ali Asghar Megji is raising hand. Wait for a while. Okay. Yes, Ali Asghar Megji. Assalamualaikum Maulana. Sorry, Salam. can you repeat allamtu and allama and he knew, because I'm just confused. He knew allamtu allama. The root word of allama is, it moves when I write. The root word is alema. Alema, the meaning is he knew. He knew. When it goes to the bab of taf'il and it becomes allama. Now, अब यहां पर सिर्फ इसको मालूम नहीं है, बल्कि ये मालूम करवा रहा है किसी को. So it goes to someone else. So then it will become he taught. Allama. In the same way, if you say kharaja, kharaja, he came out. But if you say kharraja, then the meaning will be he took out. यानी मैं आपको समझाऊं दरअसल क्या मतलब होता है इसका, यानी आलिमा या खराजा, दरअसल क्या होता है जब ये बाब तफ़ईल के अंदर जाते हैं, अरबिक में बाब है, बाब तफ़ईल, अल्लमा युअल्लिमु तालीम, फ़अला युफ़अलु तफ़ईल, उस अगर बाब में अगर ये जाता है वर्ड, तो ये दरअसल क्या हो जाता है, इसको किसी और शख्स की ज़रूरत होती है कि उस पर ये काम को अंजाम दे. That person needs someone else that he can do that work on that person. For example, alima, he knew, that's it. But if you say allama, I want someone that this work should be done on someone, so ये माना ऐसे तब्दील हो जाता है. alima और allama का फर्क ये है भैया. जैसे आपने क्या कहा था, for example, nazala, it came down. सही है. नज़ला came down. नज़ला he brought it down. The meaning will be like that. तो आप लोग ने असल में ग्रामर नहीं पढ़ी है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी कि आपको सारी चीजें बता सकूं मैं. सॉरी. मैं इंशाल्लाह ग्रामर की अगर क्लास हुई तो मैं रखूंगा इसको मैं जरूर आपके लिए, ताकि ये जो है ग्रामेटिकल चीजें सारी आपके लिए हल हो सकें. खूब. इसके बाद अगला जो है वर्ड है qalu. आपको याद है qala, qala he said, qalu wow, if you remember it is for plural, qalu they said. qila, qila, देखिए फर्क क्या है qala और qila के अंदर, देखिए दोनों के अंदर फर्क क्या है. qala he said, अच्छा, qila it was said, क्या मत फर्क पड़ा. देखिए अरबी के अंदर कभी कभार आप एक वर्ब यूज करते हैं, उस वर्ब के अंदर आप क्या करते हैं, आप उसके डूअर को, सब्जेक्ट को जानते हैं. आपने कहा ही सेड, सही. जैसे इंग्लिश में आप करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस के अंदर आपको मालूम होता है कि बोलने वाला कौन है, करने वाला कौन है, ही सेड. कीला जो है पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस के अंदर यहां पर आपको नहीं मालूम है कि किसने कहा, इट वॉज सेड. तो ये इस तरीके से बनता है काला कीला.
The next word is lam yahkum. lam yahkum क्या हो जाएगा? यहकुमो आपने कहा था ही जजेस. लम क्या करेगा? आपके सामने बता दूं, लम के दो काम होते हैं. Whenever the lam comes on a, अच्छा लम किसके ऊपर आएगा? लम एक वर्ब के ऊपर आता है. यहकुमो ही जजेस. तो प्रेजेंट टेंस था ये, आपको याद होगा. तो ये प्रेजेंट टेंस था. इसके ऊपर आता है फेले मुजारे, जिसको हम अरबी में कहते हैं. तो प्रेजेंट टेंस पे आता है, इसको दो काम करता है. लम जब भी आएगा, पहले ये काम करेगा, इसको नेगेटिव कर देगा. इट विल मेक इट नेगेटिव. और इट विल टेक द प्रेजेंट टेंस इनटू पास्ट टेंस. तो देखें, यहकुमु का तर्जुमा क्या किया था ट्रांसलेशन? ही जजेस. तो पॉजिटिव था और प्रेजेंट टेंस में था. अब देखिए लम यहकुम का ट्रांसलेशन क्या हुई है? He did not judge. He did not judge. तो हुआ क्या? इसने दो काम किए. एक तो नॉट आ गया और यू सी डिड आ गया. इसको पास्ट में इसने चेंज कर दिया. तो लम जब भी अगर किसी वर्ब के ऊपर आता है तो दो काम करता है. एक नेगेटिव बना देता है और इट ब्रिंग्स द प्रेजेंट टेंस इनटू द पास्ट टेंस. ओके, फॉर एग्जांपल लम यलिद. लम यलिद व लम यूलद. ही डिड नॉट गिव बर्थ टू एनीवन. तो वहां पर भी आप पास्ट टेंस में नेगेटिव में करते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज नुमिनु. नुमिनु वी डिड दैट बिफोर, इफ यू रिमेंबर. नुमिनु, नुमिनु ये दरअसल अमीना से है, बिलीव से है. नुमिनु वी बिलीव. अच्छा, वला यहकुम गलत है. लाम के ऊपर फतहा नहीं आएगा, वल यहकुम है. ये इसको खत्म कर दीजिएगा. वल यहकुम एंड ही मस्ट जज. एंड ही मस्ट जज. अब यही मसला है कि आपने अरबिक ग्रामर नहीं पढ़ी है. ये दरअसल इम्परेटिव टेंस है. ये अम्र का सीगा है. इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ ये बुक खत्म होने दें तो देन हम कुछ क्लासेस सेकंड बुक शुरू करने से पहले आपकी ग्रामर की क्लासेस रखेंगे. देन यू शुड अंडरस्टैंड. एक फेल को, एक वर्ब को देख के आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. द नेक्स्ट वर्ब इज युअल्लिमु. युअल्लिमु ये वही है, वहां देखिए अल्लमा और युअल्लिमु. अल्लमा पास्ट टेंस है, अल्लमा. युअल्लिमु प्रेजेंट टेंस है. फर्क है ये से खाली. सॉरी, सही है. अल्लमा ही टॉट. अल्लमा. युअल्लिमु ही टीचेस. अल्लम तो आई टॉट. सही है. तो अल्लमा पास्ट टेंस, युअल्लिमु प्रेजेंट टेंस. I'll give you 5 minutes to review all the words and I'll ask Mujahid Chandu. Salamun Salam alaikum. alaikum. Maulana, how Alaikum are you? salam. Fine, fine. Alhamdulillah. Yeah, good. Okay. Yeah. Let's start the vocabulary part. Yu'allimu. Yu'allimu. Hmm. He teaches. He teaches. Ahsan. Wal yahkum. Wal yahkum. He must judge. And he must judge. And he must judge. Nu'minu. Nu'minu. We believe. We believe. The next word is lam yahkum. Lam yahkum. He did not judge. He did not judge. Ahsan Aghajan. He did not judge. Ahsan. Thank you. Thank you. Brother Ali Asgar Meghji. Assalamu alaikum again. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Qila. Qila is I said. It was said. What is qala? Qala he said. So what is the difference between qala and qila? So qala is present tense. Qila is past tense. Both of them are past. So yeah. He said, qila, it was said. Yes. So what is the difference? I told you that active voice and passive voice. Do you understand? Yes, correct. Yes. In qala, you know that who is the one who is saying, who is the doer. But in qila, you don't know the doer name. It was said. I don't know who said. Right. Okay. Next word is qalu. Qalu is they said. They said. Allamtu. Allamtu is
I taught. I taught. Ahsan, thank you. Who is ASK? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. What's your name, ASK? Haseen. Please, what's your name? Haseen. Haseen. So I'll rename your name. Okay. Please go ahead. Aqamu. Aqamu is they established. They established. Law. Law is if. If. We did some other words as well for if. Do you remember? In the previous classes, yeah? Yeah. For example, one of the word is. Was it kana was the past, okay. In ja'akum fasiqun binabain. If yes. a fasiq comes to you, if a transgressor comes to you, binabain with the khabar, okay, fatabayyanu. So in law, the meaning is the same if. In and law, okay. Now there is a difference when we use law, when we use in, grammar का एक वो है. लेकिन आप translation के लिए at this level, okay, आप understand करना if है. Okay, ha. Ha is her. She or it. Fasiqun, fasiqeen. Transgressors. What is the root word actually of fasiqun? Fusuq. Fasaqa. Fasaqa. What is the meaning of fasaqa in Arabic? Is crossing the limit. The one who crosses the limits. Thank you. Brother Dilawa Padhani. Salamun alaikum. Alaikum salam. Okay. Alaikum salam. Alaikum salam. Okay. Anna. That. If you remember, ये join करने के लिए आता है दो sentences को with that. Yeah, conjunction. Conjunction के तौर पे. Ahsan. Wa'ad. Promise. What is wa'id? It's a bad promise. If it is going to Jahannam, then you say wa'id. If it is basharat for Jannah. Yeah, a punishment. A promise for punishment is wa'id. A promise for a good thing is wa'ad. Furqan. It's a distinguisher. What is the root word of furqan? Farq. Okay. What is the difference between farq and falaq? Farq is a difference. In falaq, there should be a difference between day and night, like a dawn. It comes with a crack or difference. Though both of them, farq and falaq, the meaning is the same, is a separation. Yes. So separate हो रहे थे दो चीज. But the way of separation of falaq is different from the way of separation of farq. In falaq, the separation is due to tearing apart, due to a crack. Tearing. But in farq, there is not necessary that there should be a thing of tearing apart. The separation should occur like that. Understand? Yes. So, yes. Furqan is distinguisher. It's a khas type of distinguisher. Between false and truth. False and truth. Ahsant. Thank you, Agha Sahab. Okay, Fatima, Sister Fatima Sherali. Hello. Yes, Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ulaika. Those. Okay, those. Those far. It is isme ishara to point out something. Okay, for male and female you can use, and it is for far. Ahsant. Walida. Parent. Mother. Sorry, mother. Mother. Walid. Father. Walidain. Parents, both. Ahsan. Ahl. Children or people. People of your family.
Okay. In vocabulary, in dictionary, what is the actual meaning of ahl? I discuss with you. أهل الكتاب, people of the book. Ahl al-Kitab, people of the book. But I told you, Ahl are the persons who are living in the same house with someone. So they are the Ahlul Bayt. So they are the people, they are living with them. But metaphorically, majazan, sometimes we say that, okay, they are Ahl of that person because they follow the same thing, because they share the same beliefs. So it's like that they are under the same roof. So at that time, we are doing the translation as people of. As I told you that we are using ahl and al in the same way. There is a difference according to some ulamas. Leave it. Ahl and al is the same. Go ahead. I'll ask. Okay, yalla, do the first one. Aqamu nu'minu. A, they established, we believe. Yes. Second one, ha and law. Ha is her, and now is if. A. Asan, thank you. Sister Fatima Versi. Yes. Salamun alaikum. Salam alaikum. Sorry. Okay, Allah. Allamtu yu'allimu. I taught and he teaches. He teaches, okay. Yahkum wal yahkum. He judges and he must judge. It is yahkumu. You can write yahkumu and it is wal yahkum. It's a mistake. Okay, go ahead. Anna and wa'ad. Anna is that and wa'ad is promise. Thank you. Now I'll ask Sister Kulsum and Maryam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Transgressors, people and family, people of and family. Wow. Yes, fasikhun and ahl. Second, distinguisher, they established. Furqan, aqwa, aqam. Okay, someone is asking a question. Wait for a while. I have a question. Okay, Zahra Hirji. Okay, you go ahead. Wait for a while. Who is? Yeah, Sister Zahra Hirji, you had some questions. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Okay, I have a question on number 5. 5 says Anna and Wa'ad. So, with the recalling our previous lectures, Anna, Inna, and La also means certainly. Certainly was Inna. Anna was not certainly. Anna wasn't certainly? No. Okay, so Anna, the only meaning of Anna is used as a conjunction. As a conjunction, yeah. Anna is that. Malim, if I remember well, wasn't it An and not Anna? It was, if I remember, certainly that. The meaning was, Anna was certainly that. But in translation, if you do the translation, normally we do not write certainly that. So normally you are correct, because I remember I told you at that time, it is an, it is actually an and na. So yes, there are two words in that. Anna is certainly that. There is a certainty and there is that as well. So normally in translation, you will see the translators, they don't write certainly, but you are correct. इसके अंदर emphasis भी है और साथ में that का meaning भी देगा. Yeah, you're correct. I'll ask Sister Kulsum and Maryam, sorry. Please go ahead. You did two. Okay, the third one. B. Lam yahkum wal yahkum. Okay, the fourth one, certainly and that. Inna, Anna. A. Anna.
Okay. Prophets and mother. Prophets and mother. Nabiyun walida. 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 What is messenger? Messenger means prophet. Rusul. Messenger means Rusul, yes. Rasul. Rusul. Ahsan. Someone is asking, so both A and B are correct for number 5. Wait, number 5, I have to go back again. No, the same. No. The previous one, somebody is asking. No, you cannot say A and B both are correct. Anna and Wa'd. The correct will be B, because certainly won't be the only. Certainly will be for Inna. But if you're using Anna, the correct translation will be certainly that. But you can omit certainly in translation, but that you cannot omit. So the right answer will be B. Okay. Thank you. Now I ask. I'll ask Munawwar Hussain Virani. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah. Please, worksheet 12.2. Go ahead. يحكم بها النبيون. Number B. B is A. Do you know why? Because yahkumu needs doer and subject. Who is the subject? The subject is Nabiyun. Okay, yahkumu, the meaning is he judges. But if there is a doer which is written in after that, if you can see, okay, the pronoun, the noun is there. So yahkumun nabiyuna. So you will say that the prophets judge. The prophets judge. For example, if I say daraba, he hit, but if you say zaraba zaidun, then you won't say he hit. Rather, you will say Zaid hit. Understood? So yahkumun nabiyuna, the prophets judge. Biha. Now do the translation of biha. The translation with ba will be with. Ha is going back to Torah. You'll do inshallah the translation later on. Abhi aapke paas aayegi. Ha is going back to the Torah. The puri ayat verse देखेंगे. तो फिर ये it का translation आएगा. The prophets judge with it. Go do the second one. مصدقا لما بين يدي. مصدقا لما بين يدي. مصدقا. You were there before in our class. No. You are the newcomer. Sorry, आपको पहली क्लास में तंग कर रहे हैं. It's okay. I can. You can do something. Okay. This Musaddiqan lima for that which was for him. I think A. ना मुसद्दिक is the verifier. तस्दीक हम उर्दू में कहते हैं ना, तस्दीक कर दी उसने. He is verified. मुसद्दिकन verifier. Lima for that which bayna yaday is before him. No problem. If you're a newcomer, there's no problem. But आप लोग पिछले वाले जो classes हैं उसके अंदर कोशिश करें, then you can catch up. Thank you. Qaim Zafar. Salamun alaikum. Hello. Okay. Walaikum assalam wa rahmatullah. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. I think it's A. اذكر, remember. Now the translation, because I have not printed this book, someone has printed, there are mistakes. We did the translation, not blessings. If you remember, we did the translation as favor. Ni'mati, udhkur ni'mati. Remember my favor upon you and upon your mother. So change. So it can be both favor and blessings, or there's a difference? No. We did the translation as favor. So we'll stick what we have done the translation. So I don't want to bring more words for one singular word. Okay, go ahead. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. It's A, I think. A. And if they establish a Torah and the Bible. Better anna ka translation nahi kiya. And if that they establish the Torah and the Bible. Go for the Yeah. last one. وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. It's B. وعدا, a true promise upon him in the Torah and the Bible. Thank you. Thanks. Now I'll ask, who is R? Salamun alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. What's your name? Ruxana Ramtullah. Ruxana. Okay. Wait for a while. I've renamed you. Okay. Now, please go ahead with the phrases. Inna anzalna Tawrata. Certainly we sent down Torah. The Torah. Certainly we sent down the Torah. Okay. Fiha hudan wa nur. In it, there's guidance and light. In it is a guidance and light. Wa ataynahu al-injila. And we gave him Injil. And we gave him the Bible. Wa hudan wa maw'idatan lil muttaqin. And guidance and what more is it? Admonition for believers, for God-bearers. And guidance and admonition for the God-bearer. Last one you do. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. And he taught him No, it's present tense. It is not allama, it is yu'allimu. Okay. He teaches. And he teaches, yeah, present tense. He teaches him the book and wisdom. And the wisdom. Ahsan, thank you. Sister Rubab. Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. Salam. وأنزل التوراة والإنجيل. And he sent down the Torah and the Bible. Yeah. قال الله يا عيسى ابن مريم. Allah will say, O son of Isa. No. What will say قال is a past tense. Okay. Allah said, O Isa, son of Maryam. O Isa, the son of Maryam. اذكر نعمتي عليك. Remember my favor on you. Remember my favor upon you. وإذ علمتك الكتاب. And when I taught you the book. أحسنتي. وإذا قيل, last one, وإذا قيل لهم. And when it is said to them. It is, oh yeah, it was. When it is said to them. وإذا قيل was, it was said. It was, when it was. Now, one thing is this, I'll tell you, when it was said to the وإذا قيل لهم, you can translate, all of you please listen to this carefully. إذا is when, but إذا के अंदर, all of you, please listen this carefully because आगे ये आएगा. إذا के अंदर, it's a conditional. إذا जा, for example, इज़ा के अंदर कंडीशनल होता है और कंडीशन होती है उसका फिर आखिर में जवाब आता है कंडीशन के बाद. If it is like that, when it is like that. So when there is a conditional sentence and in that conditional sentence there is a past tense, so we are allowed to do the translation as a present tense. There is no problem. So Sister Rubab, as she translated, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, so you can do the translation like that. When it is said to them. When it is said to them, then what happens?
तो इसका जवाब आगे नहीं आया है, तो इसका जवाब आगे आएगा। सही है। सो आप याद रखिएगा, इसके अंदर होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस के अंदर हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू। नाउ आई विल आस्क हु इज SS, रुखसान हो गया, हु इज SS? सलाम अलैकुम। हेलो। ओके, सिस्टर सकीना मंजी। हेलो। Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Please go ahead. And he did not judge the people of Bible. Wait. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ. And he did not judge the people of Bible. Wait. وَلْيَحْكُمْ. That is why you are making it negative. Oh, sorry. And he must judge the people of Bible. Nah, wait. And he must judge. The translation will be correct if there is no subject after that. You can see the subject Ahlul Injil is the subject of Yahkum. So you should not bring he. So who are going to judge? Ahlul Injil, the people of Bible. Now do the translation. Okay, so how do I go on? And the people of Bible must judge. The translation. Okay. And the people of Bible must judge. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Now it will be negative. Now lam you see here, it will be negative. Yeah. And he did not judge with that which Allah sent down. You did not do the translation of man. And whoever Asante? he did not, and whoever he did not judge. Now you won't say he did not. Why? Because yahkumu, there is a pronoun inside that huwa. Huwa goes back to man. So there is no need of doing the translation of he. And whoever does not, did not judge with that which Allah sent down. Now again, see the translation what I have done. And whoever does not judge with that which Allah sent down. Now I have done the translation does not. I didn't do the translation did not. But in the vocabulary part, I said lam yahkum, he did not judge. It is just because of man. Man is used for a conditional sense. And whoever does not judge like this, the reply, the answer of that conditional sentence, it is not mentioned here. So sometimes we see the past tense has been used, but in conditional sentence, the past tense will become present tense. And whoever does not judge with that which Allah sent down, okay, now the punishment will come later on. So this is because of that. The right translation is like that. But if you do the literal translation, it will be, and whoever did not judge with that which Allah sent down. So the translation will be did not. But because of the conditional sentence, we are doing the translation as a present tense. Go ahead. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Therefore, those who is them, right? Or they? Therefore, ulaika, those are fasiqun. What is fasiqun? Transgressors. This whom, if you see, now you will see this whom is extra. There was no need, isn't it? Yeah. Ulaikal fasiqun. It was enough. Why whom has come here? This whom, this pronoun, if you see between them, because you have not done the grammar again, I'll say, this is called zamire fasl. Zamire fasl, the pronoun for fasla, one of the faida, one of the benefit is it is used as innama. The meaning of innama was only. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. The right translation will be, so those, only those are the transgressors. These are the one who are only the transgressors. So आपने grammar नहीं किए तो we are not bringing that thing in the translation. It's enough. Go ahead. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. And that which
which sent down ilayhim Which was sent down ilayhim. Yeah, okay. to to them from their Lord. From their nurturer. Their nurturer, yeah. And that which was sent down towards them from their nurturer. Last one. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. And promise upon and true promise upon them. Upon them. وَعْدًا. Wait. On him. Yeah. وَعْدًا, a promise. عَلَيْهِ, upon him. حَقًّا. True. So a true promise. Promise upon is him true. is truth. Thank you. Okay. Thank you. Now I will ask Shabbir Chandu. Assalamualaikum Maulana. Assalamu rahmatullah. Nu'minu bima unzila alayna. We believe with what we sent down. With the translation will be in, because ba, one of the meaning is in as well. We believe in what in that we which sent down upon. the unzila is Unzila we sent down. no. Unzila he sent down. It was sent down. Yes. Okay. Nu'minu, we believe be in ma, that which. We believe in that which unzila was sent down alayna. Go ahead. Go ahead. Hello. Hello. What happened? Can't hear. Hello. Okay. I'll ask someone else. I'll ask Yusuf Hamza. Salamun alaykum. Alaykum salam. Nu'minu bima unzila alayna. We believe with what was sent down to us. See, the translation will be nu'minu. We believe be in ma, that which unzila was sent down alayna, upon us. Go ahead. فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. In it is guidance and light. The prophets judge them with it. The prophets judge with it. Okay. مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Confirming for that which is before him from Torah, and guidance for the good very. And guidance and mu'idha. What is mu'idha? Mu'idha, yeah. I mean, to warn something. Admonish. Admonish, yes. Last one. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل التوراة, and he sent the Torah and Injil down. The Bible. And he sent the Torah and the Bible. من قبل هدى للناس, for the mankind. Ahsan. Now I will ask Yusuf Hamza is done. I'll ask Zahra Hirji. Salamun alaikum. Wa alaikum salam alaykum. Now do the fill in the blanks. Uzkur ni'mati alayka wa ala walidatik. Remember my blessings upon you and upon your mother. Not blessings. Only blessings. Favors. Yeah.
because ni'ma is a singular, ni'mati is a singular. Udhkur ni'mati, remember my favor, alayka wa ala, and upon your mother. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, And whoever does not judge with that which Allah sent down, so those are the transgressors. Those are the transgressors. Asante, do the translation of this verse. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Okay. So وَإِذَا, and when قِيلَ لَهُمْ, it was said to them, Aminu, believe you all, bima anzalallah, with that which Allah sent down. In that Allah sent down. Qalu, they said, Nu'minu, we believe, bima unzila alayna, with that which was sent down upon us. Believe in. We believe in that which was sent down upon us. If you see, وَإِذَا, as I told you, because it's a conditional sentence, so I have done the translation qila as a present tense. And when it is said to them, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, when it is said to them, آمِنُوا, believe, بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ, in that which Allah has sent down. قَالُوا, they say, again they say, why قَالُوا? Because of the إِذَا. It's a condition sentence. نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, we believe in that which was sent down upon us, because they are the one, because the Ahlul Kitab, they were not ready to accept the Holy Quran, and they were saying that we will believe only that which was sent down upon us, we will accept only those things. Thank you. Okay, Galaxy S7H. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. And we sent the Torah and the Bible, the Torah and the Bible. Wait. It is not وأنزلنا. It is وأنزل. He sent down. He sent down. He sent down the Torah and the Injil. And the Bible, من قبل. And the Bible before, min qablu, before the guidance upon the mankind. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, and he sent down the Furqan, the Quran. The distinguisher. See how we have done the translation. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, and he sent down the Torah and the Bible. مِنْ قَبْلُ, from before. هُدًى لِلنَّاسِ, as will be in bracket, a guidance for the mankind. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, and he sent down the distinguisher. Ahsan, thank you. Please, Mr. Tahira Chandu. Yes, Malana, sorry, my phone had switched off. No problem. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. And he teaches the book and the wise. Wait. And he teaches the book. You have not done the translation of who. وَيُعَلِّمُهُ. And he teaches it. And he teaches him. And he teaches him the book. And he teaches him the book. And the wise. Wisdom. And the wisdom. And the Torah and the Bible. And the Bible. Asante. Thank you. Now I'll ask who are the remaining ones. Zainab Muhammad Raza Panjwani. Yes, salam alaikum. Alaikum salam. Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun. So, inna is certainly, anzalna, we sent down. Wait. It is not only inna, it is inna. Certainly we. Okay, certainly we, anzalna, sent down, Tawrat, the Tawrat, fiha, in it, is hudan, a guidance,
ونور and a light. يحكم يحكم, he judges with it. Now you'll see he judges. Nabiyun is there. There is no need of he. Who are judging? Yahkumun Nabiyun. So who are judging? Okay, so the messengers. The The messengers no, judges with messengers, it. the prophets. The prophets Okay, judge. okay, so certainly we send down the Torah. In it is a guidance and a light. Yeah. And the messengers judge with it. You are doing the translation as messenger. Messenger is Rusul. It is Nabiyun. Nabiyun is prophet. Okay. Yeah, the prophets judge with it. Asante, thank you. Now I will ask Zamina Dhala. Alaikum assalam. Now you have big ayah, the very long ayah. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Go ahead. And we gave Injil. He gave Injil who? To whom he gave the Injil? وَآتَيْنَاهُ. We gave him Injil. Yeah, we gave him Injil. Bible. In its guidance and light. And verifier that which is before him. Asante. From Torah and guidance and admonition for the code-weary. Asante. Now I want to explain one thing grammatically. मैं आपको बताऊं translation के अंदर. And we gave him the Bible. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. In it is a guidance. Okay, فِيهِ هُدًى. وَنُور and light. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. And it is a verifier of that which was before it. Now, Min Torah, you will see I have not written the translation of min. Why is it so? Let me explain it to you. Ma, if you say lema bayna yadayhi, and that which is before them, and that which was before them, this ma is called ma'i ibhamiya. You don't know what is ma, what was before it. Now after that you see, normally you see ma, and after that you will see min. This min is called mine bayaniya. Mine bayaniya, yani min, which explains the ma which is before. What is that ma? Torah. So the verse is saying, okay, we gave the Injil, there is a guidance, there is a nur, and this Injil is a verifier of that which was before them. What was that thing? That was Torah. This min is explaining that ma. So in translation, normally we don't bring min in translation. So a verifier of that which was before it. What was that before it? It was the Torah. So grammatically, जो कहना इसमें translation की जरूरत नहीं होती है. Thank you. Brother Kareem, salaam alaikum. Okay, yalla, do this. Translation. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. And he must, and the Ahlul Injil, the people of the Bible, should or must judge with that Allah has sent down in it. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, and whoever does not judge with that Allah has sent, so they are the transgressors. Ahsant. Now, I don't know कितनी आयतें बाकी हैं. Yeah, because मेरे पास सारे participants कम हो गए. Please raise your hands. I'll give you the chance. Please raise your hand. Ya Allah, nobody wants to participate. Please raise your hand who wants to do the translation. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. Okay, I'll ask. Brother Dilawar Padhani, Salaam alaikum. Alaikum salam. Okay, Allah, go ahead. Hello. Sorry.
Yeah, please. Yeah. And if they have established Torah and the Bible and what was sent down to them from their God. From their nurserer. Walau From and nature. if that they had established the Torah, Established the Bible, and that which was sent down to them from their God. From nurturer. Rabbihim is nurture. We did the translation. Thank you. Anyone else? Let me ask Kulsum and Maryam, sister Kulsum and Maryam. عليكم السلام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. When Allah said, O Isa, son of Maryam, remember my favor upon you and upon your mother. أحسنتي. Sister Rubab. Yes, Assalamu alaikum. عليكم السلام. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. And when I taught you the book and the wisdom and the Torah and the Injil and the Bible. And the Bible. Ahsanti. Thank you. Thank you. Now I will ask Brother Qasim Dhirani. Hello. Alaikum assalam. Yalla, last ayah. وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. And true promise upon him in the Torah and the Bible and the Quran. A promise upon him is truth in the Torah and Bible and the Quran. Ahsan, thank you for your time. इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी. ईद आ रही है और माह रमज़ान तमाम हो रहा है. अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. इल्तिमास दुआ. खुदा हाफ़िज़.